13th of December. Question paper was taken out, as a result of which the question paper got circulated all over the state and the question paper leaked. This is the foundation of, my lord, the list which started. And therefore, of the selection test has been compromised and a fresh selection test is required. Are wrong. So the argument has two facets. One, whether question paper leaked and whether commission justifiably should hold a re-examination of the entire state, or having a selection test confined to one center where selection process got disrupted. So certain figures should be relevant. अरे उसमें हम there were 359 applicants. 4 lakhs admit card was put on my lordship's website. 4,83,000. 80,359. Out of which 4,48,470 only downloaded it. Yes. Total applicants who appeared three lakh 23,047. This was, my lord, on 13/12. In Bapu Sabhagar, there were 912 centers across 36 districts of the state of Bihar. Total centers across 912. Spanning across 36 districts, not 38. 36. Bapu Sabhagar was 912. If Bapu Sabhagar is taken, so 911 centers examination selection test was conducted peacefully on 13/12. So far Bapu Sabhagar is concerned, in Bapu Sabhagar
total number of appearing candidates, 5,000. नहीं 4 के नहीं उस दिन total number of appearing candidates. Where is this? The examination center having capacity of 25,000 persons to sit and write exam. It's in the Kumrar region or on the main road? Main road. It has capacity of 25,000 applicant candidates. 13 तारीख को यहाँ कितने लोग बैठे? कितने लोग थे कैंडिडेट यहाँ? Yes. How many candidates were there in Bapu Sabhagar? 12,012. Sitting arrangement was made for 12,012. The candidates who appeared 5,000 was examination commenced at 12. Timing of examination was 12 to 1:30. Yes, 12 to 1:30 or 2? 2. 12 to 2. And the candidates had to report latest by 11 a.m. Those who would have come after 11, even 11.1, they would not be allowed entry. So positively, every applicant has to appear at the center latest by 11. 1 hour is provided because, my lord, every candidate, not only candidate, every person who is in the center is staff. No person who is present in the center or at the center is allowed, my lord, entry with any electronic gadget capable of transmitting or receiving any message. And this has been scrupulously observed. There has been absolutely got entry or sneaked with any electronic device. Yes. Apart from that, huge number of jammers were installed across all should exceed 13,000 approximately. And this was provided by Electronic Corporation, ECI, Electronic Corporation of India. Every step was taken to ensure that nothing comes in, nothing goes out. Bapu Sabhagar selection test commenced as scheduled at 12. Large number of applicants were writing their examination. A handful of applicants started disrupting, saying that there has been delay in distribution of question booklet. The authorities handling the process, my lordships, keeping
the sensitivity, and in order to ensure that the selection test passes smoothly, even assured those handful of applicants creating ruckus that they would be allowed extra time pretexts or some more, my lordships, allegations were cooked up, namely that the question booklets were not open in presence of the applicants, and so on and so forth. In a selection test of this nature, the number of applicants, my lordships, gradually increased, and only a minority of the applicants who, my lord, designedly wanted to disrupt the selection test. Their only object was to disrupt it on one or the other pretext. In this process, one government employee suffered injury. He was not being allowed to taken out to the hospital. He was anyhow shifted to the hospital, and reportedly he also died. They came up Magistrate, Senior Superintendent of Police, my lord, rushed to the spot to contain any untoward happening, and thus the exam at Bapu Center got disrupted because those applicants who were also writing their exam peacefully, they were prevented, their question booklets were snatched. So it was a sinister design hatched up from before. Some booklets were taken out. It is those booklets which are reportedly being urged to persuade my lords to be convinced that they've spread across all other centers. Were in any manner transmitted to any of the remaining 911 centers of the state of Bihar. BPSC has taken all precautionary steps, including ascertaining. Just a minute. How come? I mean, we are absolutely in agreement with what you say. Every arrangement, but how these handful of people, they could come out of the hall with their booklets? They should have been stopped. My lordships, it was a difficult situation, because if the number, in fact, my lordships, district administration reached there and this ruckus took place inside. It started inside the hall, and later it spread. The same applicants entered other halls. There are different halls. But inside the campus. Inside the campus. And we admit. Inside the hall, they would be without any electronic gadgets. Yes. But outside, outside, their friends were waiting. There are a large number of people who were waiting.
were awaiting outside. Why? But why? And they have a vested interest. Coaching institution is the biggest, my lord, nemesis of purity of examination. Anywhere. You have the authority to regulate, not the recruiting agency, but the state. My lordship's state. That let me not. We will be asking questions. You continue with your scheme. And they took away some of the OMR sheets outside. But what I am trying to drive at is that OMR sheet did not reach any other center by any mode. Electronic mode. In fact, the OMR sheets were thrown out. The question booklet were thrown out of the boundary wall. That was around one. Question reaching other centers. It is impossible, apart from the fact that BPSC has taken all precautions to avoid any infiltration. And it was foolproof arrangement. Inside the center was having, my lord, any electronic gadget to receive something or to transmit something. It could not have been possible unless it was taken physically inside the center. In none of the writ petitions, my lord, there is any material to show later on, my lordships, by sending some messages on Twitter, Instagram, etc., newspaper, a story, my lords, many groups join. When these kind of situations which they joined in this entire, my lordship's episode, and then they started fabricating a story. Jammer did not work. Post examination, when BPSC to justify or material to demonstrate and prove the reports were called from every center. BPSC scrutinized it. BPSC evaluated every possible information which they could collect from their own machinery, including
the complaints or, my lord, these messages, and then not a case which will require or which will possibly be taken as a ploy to cancel the entire selection test, and it would suffice to hold a re-selection test at Bapu Sabhagar alone. Because the report of district magistrate was very categorical. District magistrate had submitted a report to the commission regarding the activities at Bapu. You will just give the reference later. BPSC therefore took a conscious decision that it is in public interest, in the interest of, my lord, aspiring candidates, that entire selection test and hence a date for test was fixed on 4th of January 2025. On 4th of January, my lordships, the total number of applicants who appeared, 5943. That is more than the candidates who sat, who Less than. No, 5,900 and odd, you said. Five nine? 5,009. And the first time it was 5,900 and 5,900 odd, my lord, and later on to they snatched, it could not be just how many further candidates have been. Since the total number of seat plan was for 12,012 candidates. all right. State, apart from these measures, has been videographed. If the court feels persuaded in any manner, even though there is no material, we can produce video graphed selection test any moment. Bapu Sabhagar was also having similar video facility. And it is in this context, my friends have taken to the report of district magistrate. My lordships, I am tempted to refer it again. Kindly come to the report of the district magistrate. If, my lord, on these grounds, the selection test is tinkered, disruptors are always there, my lordships. Howsoever stringent measures may be taken. Annexure C, page 52 of the counter available. Yes. This is the covering letter. Next page, my lord, is detailed exhaustive report. I'll take little time, my lord, in placing this report because this is the foundation
for the commission to take a decision apart from other materials. परीक्षा की तिथि को सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल ससमय अपने कर्तव्य पर उपस्थित थे। सभी दंडाधिकारी द्वारा उपलब्ध करा दिया गया। विधिवत तरीके से प्रश्न पत्र का सील्ड बॉक्स खोलने के पश्चात प्रत्येक ब्लॉक ए एवं बी के विभिन्न कमरों में प्रश्न पत्र एवं ओएमआर सीट का सील्ड पैकेट उपलब्ध कराया जाने लगा। प्रश्न पत्र वितरण में 10-15 मिनट विलंब होने पर कुछ परीक्षार्थी केंद्राधीक्षक एवं वीक्षकों के यह समझाने के बावजूद कि विलंब के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा, हंगामा करने लगे। परीक्षार्थियों की आपत्ति इस बिंदु पर थी कि उनके ही कमरे में सील्ड बॉक्स को क्यों नहीं खोला गया। शोरगुल सुनकर अन्य कई कमरों के कुछ छात्र भी बाहर निकल आए और बुकलेट एवं उपस्थिति पत्रक छीनकर फाड़ने लगे। उनके द्वारा यह अफवाह भी फैलाई जा रही थी कि परीक्षा रद्द हो गई है, जिस कारण कुछ अन्य परीक्षार्थी भी बाहर आ गए और बुकलेट एवं ओएमआर शीट लेकर परीक्षा केंद्र के बाहर परिसर में एकत्रित हो गए। उन्हीं में से एक परीक्षार्थी ने ट्रंक से प्रश्न पत्र का पैकेट लूट लिया और हाथ में लहराते मुंह के साथ गेट तोड़कर बाहर निकल गया। परीक्षार्थियों ने कई कमरों में जाकर उपस्थित पत्रक आदि प्रपत्रों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बावजूद उपस्थित दंडाधिकारी एवं पुलिस बल द्वारा स्थिति को नियंत्रित करते हुए शेष परीक्षा को संपन्न कराया गया। सूचना प्राप्त होते ही जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पटना भी केंद्र पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया, अन्यथा भारी तोड़फोड़ एवं आगजनी कर परीक्षा नहीं होने दिया जाता। नियंत्रित परिस्थिति में विलंब निम्न कारणों से हुआ। चूंकि परीक्षा भूतल के साथ साथ सभी 5 तल्लों पर आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में परीक्षार्थी भाग ले रहे थे। विधिवत तरीके से प्रश्न पत्र का सील बॉक्स खोलने के पश्चात क्रमवार तरीके से अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाने लगा। प्रत्येक हॉल में 273 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था थी और प्रत्येक स्टील बॉक्स में 192 प्रश्न पत्र थे, जिसे 16 सील्ड टीएस बैग टेम्पर एविडेंस सिक्योरिटी बैग में रखा गया था। प्रत्येक टीएस बैग में 12 प्रश्न पत्र थे। अतः एक स्टील बॉक्स में रखे गए टीएस बैग को दूसरे परीक्षा हॉल में शेयर करना था, ताकि प्रश्न पत्रों को क्रमवार तरीके से परीक्षा के नियमानुसार अभ्यर्थियों को बांटा जा सके। टीएस बैग को एक हॉल से दूसरे हॉल में ले जाने तथा क्रमबद्ध रूप से प्रश्न पत्र वितरित करते हुए ऊपर तक पहुंचने में विलंब हुआ। परीक्षार्थियों द्वारा उनके ही कमरे में सील्ड बॉक्स नहीं खोले जाने पर आपत्ति की जाने लगी तथा प्रश्न पत्र वितरण को बाधित किया गया। यद्यपि केंद्राधीक्षक द्वारा परीक्षार्थी हंगामा करने पर आतुर थे। संपूर्णतया ऐसा प्रतीत होता है कि देर से प्रश्न पत्र बुकलेट वितरण का बहाना बनाते हुए कुछ परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा रद्द करवाने की साजिश के तहत सुनियोजित तरीके से अफवाह फैलाकर परीक्षा को बाधित करने की नीयत से बहिष्कार को अंजाम दिया गया। परीक्षार्थियों को परीक्षा समाप्ति के पूर्व परीक्षा केंद्र से बाहर बुकलेट प्रश्न पत्र एवं ओएमआर शीट आदि नहीं लेकर जाना था, लेकिन कुछ परीक्षार्थियों ने ऐसा कृत्य करते हुए परीक्षा की प्रक्रिया को भंग करने का प्रयास किया। अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा कक्ष में हंगामे के दौरान एक वीक्षक श्री राम इकबाल सिंह को दिल का दौरा पड़ा, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाने की व्यवस्था सूचना अनुसार उप वीक्षक की मृत्यु भी हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परीक्षार्थी के रूप में कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा में सम्मिलित थे एवं उनका एक ग्रुप परीक्षा भवन में बाहर भी मौजूद था, जो कि बाहर से हंगामा करने पर आतुर थे। कुछ अभ्यर्थियों ने केंद्राधीक्षक को घेर कर परीक्षा निरस्त होने की घोषणा करने हेतु दबाव बनाया, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं की। इसके अतिरिक्त कुछ परीक्षार्थी तोड़-फोड़ एवं अन्य प्रकार से व्यवधान करने पर आतुर थे, ताकि किसी तरह परीक्षा निरस्त हो। अतः जिम्मेदार परीक्षार्थियों एवं उपद्रवी
के विरुद्ध सख्त अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई करने के साथ साथ हत्या का मुकदमा भी दर्ज करने की अनुशंसा की जाती है। इस प्रकरण में कुछ कोचिंग संस्थानों की भी भूमिका commission which is on page 58. This has not been shown to my lords up till now. None of the petitioners have, my lord, shown this document. लोक सेवा आयोग में दिनांक 16/12/24 को 12 बजे मध्याह्न में हुए आयोग पीठ की पूर्ण पीठ की 46वीं बैठक की कार्यवाही। दिनांक इतना को आयोजित एकीकृत 70वीं संयुक्त आयोग को प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में आयोग के निर्णय के संबंध में उपर्युक्त एतद विषय के संबंध में आयोग को अवगत कराया गया कि आयोग द्वारा एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 13/12/24 को राज्य के 36 जिलों में अवस्थित 912 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। इसके अंतर्गत पटना जिला के एक परीक्षा केंद्र संख्या इतना बापू परीक्षा परिषद मौर्य विहार कॉलोनी कुमरार पटना पर कुछ परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पत्र की सील वितरण से पहले से खुली होने और वितरण के बाद विलंब से प्रारंभ होने की बात कहकर हंगामा और भ्रम की स्थिति उत्पन्न की गई और परीक्षा बाधित की गई। जिलाधिकारी पटना द्वारा इतना को तत्संबंधी सूचना दिए जाने के बाद आयोग कार्यालय द्वारा परीक्षा केंद्र के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित करने का अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में उनके द्वारा 15/12/24 को विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त समर्पित प्रतिवेदन में प्रश्न पत्र वितरण में 10 से 15 मिनट विलंब होने की बात बताई गई। साथ प्रश्न पत्र के टीएस बैग पूर्व से ही फटे होने की बात कहकर प्रश्न पत्र लीक होने संबंधी अफवाह फैलाए जाने के कारण अन्य अभ्यर्थियों द्वारा भी परीक्षा में भाग लेने से मना करने, बुकलेट एवं उपस्थिति पत्रक फाड़ने की बात कही गई। जिलाधिकारी के प्रतिवेदन में परीक्षा प्रारंभ होने में विलंब के लिए निम्न कारणों का उल्लेख किया गया है। परीक्षा भूतल के साथ साथ सभी 5 स्थलों पर आयोजित की गई थी। प्रत्येक हॉल में इतने अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था थी। प्रत्येक स्टील बॉक्स में 192 प्रश्न पत्र थे, जिसके कारण प्रश्न पत्रों को एक हॉल से दूसरे हॉल में शेयर करना था। इसके कारण प्रश्न पत्रों के टीएस की जाने लगी। प्रश्न पत्र वितरण को भी बाधित किया गया। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा केंद्र पर परीक्षा बाधित होने के फैक्ट फाइंडिंग के लिए आयोग स्तर पर भी समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी पटना द्वारा आयोग को सौंपे रिपोर्ट एवं बापू परीक्षा परिषद में लगे सीसीटीवी का वीडियो क्लिप को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि उक्त परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के प्रारंभ में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा को बाधित किया गया एवं अन्य अभ्यर्थियों को भी परीक्षा देने से रोका गया। इसके बावजूद बहुतायत संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न कर OMR आंसर शीट को समर्पित किया गया। पूर्ण पीठ को अवगत कराया गया कि वर्तमान मामला 27/12/2020 से हूबहू मिलता है। उस वक्त भी जिला अधिकारी औरंगाबाद ने विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित किया था कि परीक्षा केंद्र 660 पर सील खुला होने तथा परीक्षा 12:30 बजे अपराह्न प्रारंभ होने की शिकायत करते हुए कुछ परीक्षार्थियों ने अफवाह फैलाकर परीक्षा को बाधित किया, जिसके कारण अन्य परीक्षार्थी परीक्षा में भाग नहीं ले सके। उस वक्त आयोग ने 2 वरीय उप सचिव की फैक्ट फाइंडिंग समिति का गठन किया गया, जिसने स्थलीय जांच कर अपना प्रतिवेदन दिया। इसकी विस्तृत जानकारी आयोग को आयोजित पूर्ण पीठ की बैठक की कार्रवाई में दी गई, जिससे स्पष्ट होता है कि कथित रूप से सामग्री बांटने में विलंब, सील खुलने रहने की अफवाह फैलाकर कुछ उपद्रवी छात्रों द्वारा शोर मचाकर परीक्षा को बाधित किया गया और अन्य छात्रों को परीक्षा देने से रोका गया। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों जिला
परीक्षा परिषद केंद्र पटना पर वीक्षक, सहायक केंद्राधीक्षक, अन्य स्टाफ इत्यादि की नियुक्ति तथा सीसीटीवी की व्यवस्था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा की गई थी। केंद्र पर मजदूर इत्यादि व्यवस्था करने की जिम्मेवारी भी बीएससीबी की थी। यह केंद्र पूर्ण रूप से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में था। आयोग के किसी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई थी, अर्थात उस केंद्र पर सुचारू रूप से परीक्षा का आयोजन करने की पूर्ण जिम्मेवारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की थी। जिला पदाधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट, बापू परीक्षा परिषद में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, दिग्वीक्षक, सहायक केंद्राधीक्षक और केंद्राधीक्षक से हुए विमर्श इत्यादि स्पष्ट होता है कि बिहार और कुछ परीक्षार्थियों को उपद्रव करने का बहाना मिला। ऐसा केंद्र जिस पर 12,000 की संख्या में परीक्षार्थियों की परीक्षा ली जानी थी, उस केंद्र पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा आयोजन की आवश्यक अग्रिम तैयारियां एवं रिहर्सल किया जाना था, लेकिन इस संबंध में बीएससीबी के पदाधिकारियों द्वारा गंभीर प्रशासनिक चूक हुई है। यह हैरानी की बात है कि केंद्र से 10 स्टील ट्रंक जो पूरी तरह सुरक्षित और सील थे और जिन्हें खोला तक नहीं गया था, कोविड दिनांक 13/12/24 की संध्या आयोग कार्यालय में वापस किया गया। स्पष्ट रूप से बापू परीक्षा परिषद केंद्र के प्रभारी पदाधिकारी 1920 अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पहुंचाने में करीब 5300 परीक्षार्थी परीक्षा पूर्ण कर ओएमआर उत्तर पुस्तिका लौटा सके, लेकिन बहुत सारे परीक्षार्थी उपद्रवी तत्वों द्वारा रोकने के कारण प्रश्न पत्र विलंब से नहीं मिलने के कारण परीक्षा में भाग नहीं ले पाए। साथ ही विभिन्न न्यूज चैनलों पर चलाए जा रहे वीडियो क्लिपों से यह स्पष्ट होता है कि कुछ परीक्षार्थियों द्वारा एक परीक्षा परिषद केंद्र को छोड़कर राज्य के शेष 911 केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से बिना किसी घटना के पूर्ण होने की सूचना केंद्राधीक्षक को जिला पदाधिकारियों द्वारा दी गई। वैसी स्थिति में आयोग कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा बापू परीक्षा केंद्र पर हुए हंगामे के कारण राज्य के 4,70,000 से अधिक अभ्यर्थियों करना उचित नहीं समझता है। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में the commission considered every aspect of the matter and then it decided to have a re-examination on that particular center. And accordingly, the re-examination was held on 4th of January 2025. The test writing the mains. The total candidates who have, my lord, secured qualifying marks are my friend, my lord, instructs that 2,03,000 and odd. They have not secured, my lord, the minimum qualifying marks. No, we are not concerned with that. We are not concerned with that.
Yes. My Lordships, the Commission has filed an exhaustive counter affidavit dealing with every aspect. In this case only. Yes. To complete your arguments, then we'll be asking you 2 questions. Yes. It is coming to us. Yes. My Lords will kindly come to paragraph 25. Of the counter. Yes. Yes. That it is stated that after having successfully conducted the re-examination on 4th January, that it is stated that after having prevailing practice, the Commission got the provisional answer keys of the question papers for both exams, 13 December 24 and 4 January 25. 13 December 24 and 4 January 25, prepared by high-level advertisement was issued on the Committee of Subject Experts. An advertisement was issued on 8th January 25. Provisional answer keys from candidates, inviting objections, if any, about provisional answer keys from candidates during significance for the reason that the courts have, my lord, dealt with as to what is the consequence of not availing this opportunity of filing objections. Whether the court in its discretionary jurisdiction can grant indulgence in favor of somebody who has not availed this opportunity. It was also informed in the press note that final answer keys will be published after the subject experts have considered all the objections of the candidates. It may please be mentioned here that inviting objections on provisional answer keys general practice being followed by Commission for all its examination is a part to keep exam process completely fair, transparent, and inclusive. It is stated that Commission to provisional model answer of some questions of general studies paper. After careful deliberation, the independent subject expert committee came to the conclusion that out of 150 questions of general studies paper for number 58, 101, 114 and 1117 of each series for which examination held on 13/4 of one I series for which examination held on 4/125 were required to be deleted for detailed reasons recorded against every such question in the report. The subject expert committee also finalized answer keys for all the questions for which examinations were held on 13/12/24 and 4/125. It may be added here that the Commission doesn't interfere in such academic exercise and the recommendation of expert committee is considered as Come to page 27. Para 27. It is stated that before filing OMR sheets as an abundant measure of precaution and transparency, the Commission made all OMR sheets of candidates published and accessible. What is this? Scanned copy. Scanned copy of every candidate. It's put on the Yes, on the website. And what would that mean? They will know That these are the questions. now.
I mean, must be accessible only to that candidate with a passport. Yes. Is this a regular procedure or Yes. adopted this time? Commission, my lordship, is based on experience. Every examining body, including Public Service Commission, my lord, For the first time that even the answer sheets are uploaded. that it is stated that after having considered After that, Objections are invited. my lords will kindly. objections are invited that I had not answered this. Somebody, whether that did not take the Stanford or any complaint. My lords will now kindly come to the detail, my lordships. निकाल के दो page 6. एकीकृत my lords have got that. Yes. एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन दिनांक 13-12-24 को किया गया. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू 13-12. उक्त परीक्षा में सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज विषय में लिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र 1 से 150 तक के औपबंधिक उत्तरों में को आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए उम्मीदवारों से आपत्ति सुझाव की मांग की गई. तत्पश्चात प्राप्त आपत्तियों के विषय विशेषज्ञ समिति की बैठक में संपन्न की गई एवं सीरीज ई के प्रश्न पत्र संख्या 1 से 150 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर का जांचोपरांत एवं समीक्षोपरांत निम्नांकित अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किए गए. This is after my lord considering 4,900 answer. Kindly come to page 65 onwards. How detailed consideration has been given. Question number 1. No change. Pyrite is an ore for extraction of sulfur. Acha, what is an ore? Yes. Question number 4. No change. Shifting of capital from Kolkata. 1911. Only the announcement regarding transfer was made. Tarachand History of National Movement, Volume 3, itna. Question number 30. No change. Financial IIP data reveals that in financial year 2023, capital goods and infrastructure, construction goods increased 31. वो सब की जरूरत नहीं है. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 43. No change. लोक संग्रह was one of the newspaper published by Swami Sahajanand. And what was the question? Somebody had mentioned it. That it was a weekly magazine. I mean, at different times, there were monthly newspapers, there were weekly newspapers. I'll take to my lordship. Question number 100. Question number 100. No change. Malik Kafur was purchased by Nusrat Khan. J.L. Mehta, Advanced History of Medieval India. Fire extinguisher. Question number 93. Mr. Abhinav was referring to this. Question number 93. Sodium bicarbonate, no change. Sodium bicarbonate produces more carbon dioxide than dill sulfuric acid is better than Kong sulfuric acid.
And question number 84. Question number 84. P.N. Ojha is the editor of the book 100 Years of Indian National Congress. What was asked who is the editor. Therefore, my lordship, Supreme Court, times without number, including my lord in the Richel and Vijay. and also subsequent judgment of Vijay. Has said that the court should not, my lordships, become experts. Number one, number two, my lords, in the interest of my lord, the overall public interest and the interest of aspiring applicants. My lord, the is not an exercise, my lord, done in a casual manner. Kindly see, my lord should kindly see. It's a big committee. See the signature on page 64. These are the experts, different subject experts. Next, my lord should kindly come. And you say that you don't interfere in all this process. Yes, naturally. And experts are experts. BPSC, my lord, takes the services of examination conducted on 4th January. The questions, my lord, will kindly come to page 69. There were four objections with regard to 4 questions. All were deleted. Deleted. Question number 10, the experts have assigned reasons. It is not exit. And after deletion, my lords, if it is a examination of 150 and questions are deleted, then naturally, my lord, on the remaining it becomes 150 and then it is rationalized with that. What strategy you're deleting? Fun in deleting is, my lordship. So you don't. So then it becomes 149 or Yes. 148 or Yes. 147. Yes. Since, my lord, there is negative marking also. No, but you deleting means you give 1 mark. And then so you're through. This is a general tendency, my lord. Every applicant thinks that he has written better. But let us not. I mean, they are young students. If they are students, I'm not criticizing. उस पर क्यों कहें? उनकी अपनी I'm not criticizing, but this is, my lord, general psyche. students की अपनी मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने एग्जाम दिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको क्वालिफाई करना चाहिए। ठीक। अब ये बताएं। नाउ इसके अलावा क्या करना है आपका? नहीं, एक और है कि अगर हिंदी और इंग्लिश में डिस्क्रिपेंसी है इंस्ट्रक्शन में, अगर क्वेश्चन में कहीं हिंदी और वैसा तो बात नहीं किया गया। मेरा काउंटर एफिडेविट बहुत एग्जॉस्टिव है एंड आई हैव डेल्ट विद एवरी aspect. हमें एक मिनट सप्लीमेंट्री भी देखिए। हाँ, आप पहले कर लीजिए। When you say that you are done, then we will be asking questions. We have few queries to make. हम लोगों को भी रिप्लाई कर दिया जाएगा। हाँ जरूर। Copy submission. Already you filed the counter in this case. Why to take this objection photo करके कोई जिनको नहीं है उनको आप दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है उससे?
अरे पप्पू जो आपके केस में है वही पप्पू में है। आप सारे इलेक्शंस लगे हुए हैं जो इसमें है। Why do you foster this argument? Why can't you give it? हाँ दिलबाग। This part to being industry. These I mean, anybody. don't- issue decide करना है, मुझे नहीं मिला, वो नहीं मिला। I don't believe in trivial objections. वो दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए। इतना आंसर शीट जब छपते हैं उसका फोटो वही पर ऑब्जेक्शन क्या करना, इन्हें हमने दिया था, आपका सिग्नेचर देखिए, रिसीव किया है, इतना बहस करने की क्या मेरा जरूरत है? सप्लीमेंट्री भी एक बार देख लीजिएगा। I need not, my lord, place each paragraph. पेज नंबर मिस्टर पांडे, tell us the running page number. Mention नहीं किए हैं। नहीं किया है, कहीं से बोल रहे हैं। In the supplementary counter of filed by the commission. हाँ, तो आपने पेजिंग किया है, नहीं किया है? पेजिंग नहीं किए हैं। अभी तक तो आप पेजिंग बता रहे थे। उसका इंटरनल पेज। वो कब फाइल किया? 3 to 5 है। Filed on वो समीर कुमार सिन्हा फाइल्ड ऑन 21/2/2025। Yes. हाँ जी बताइए। इसका 3-4 पैराग्राफ मैं दिखाऊंगा। हाँ, इंटरनल पेज केवल बताएंगे आप। सब पेजिनेशन किया हुआ है हम लोग के ब्रीफ। पैरा 4 ऑनवर्ड्स। पेज 620 जी। It is further stated that as per the standard protocol of the commission, after time 30 am to 11 am, for all the exams starting at 12 noon, no candidate is allowed to enter any examination center after 11 am. All candidates, invigilators, other staff, suited for exam duties are barred from bringing any communication device like entry only after thorough and careful frisking by district police. As such, it is impossible for any candidate, staff or invigilator to carry 13,000 213 jammers were installed by Electronic Corporation of India at 911 centers during 70th CCE at strategic places to restrict, deny access to mobile internet connectivity. All jammers and continue to remain activated till end of exam. Thus, all candidates are practically confined to electronically sanitized exam hall where there is no mobile or internet connectivity, wireless signals are available. Then possible for anybody to communicate with any candidate through mobile internet, whereas all